Hello, class fifth. This is your third chapter, subject and predicate. And you know what is the definition of a sentence? Sentence is a group of words that make complete sense. ठीक है, complete sense बनाता है वो group of words को sentence कहते हैं. And I told you in the last video that sentence is divided into two parts, subject and predicate. Subject क्या होता है? Subject जिसके बारे में बात होती है पूरे sentence में, और predicate क्या होता है? जो भी हमने बात की है subject के बारे में. ठीक है, लाइक इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, सुहाना इज़ अ गुड स्टूडेंट. सो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुहाना. सो सुहाना इज़ द सब्जेक्ट और हम उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? इज़ अ गुड स्टूडेंट. सो दैट इज़ अ प्रेडिकेट. आई टोल्ड यू इन द प्रेडिकेट देयर हैज़ टू बी अ वर्ब. इज वर्ब है, कौन सा वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, सो पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल अस what the sentence is about is the subject, and the part of sentence which tell us something about the subject is the predicate. Okay, now you can read some sentences like birds fly, the birds flew away, the two babies were feeling scared. All these things are example of subject and predicate. So what we are getting from these examples that subject और predicate एक एक वर्ड का ही ज़रूरी नहीं होगा. ठीक है, एक दो तीन चार वर्ड्स का भी हो सकता है. Okay, I hope this is clear. Then the order of the subject and the predicate. It is not necessary that subject will always come in the front and then predicate will come. इसके position change हो सकते हैं according to the emphasis on what we are going to give. Then in imperative sentences what happened? The subject is not mentioned. In imperative sentences कौन से होते हैं? जिसमें subject जिसमें कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस ये दिया जाता है. ठीक है, सो सब्जेक्ट इज़ नॉट मैंशनड इन दीज. लाइक यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, गो टू स्लीप, गेट अप फ्रॉम द बेड. सो किससे कह रहे हैं? इट्स नॉट मैंशन, बट हियर द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड. लाइक इसका मतलब क्या है? यू गो टू बेड, यू गेट अप फ्रॉम द बेड. ठीक है, लाइक यू कैन सी हियर the sentence usually means you go to sleep, you get up from the bed. So you is the subject, it is not stated but implied. ओके, हमें मानना पड़ता है कि यहाँ पे you से ही कहा जा रहा है. ओके, नाउ यू कैन सी दिस एक्सरसाइज ए. यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो सी दिस एग्जाम्पल फर्स्ट. सुमी केम फर्स्ट इन द क्लास. सो सब्जेक्ट क्या है? सुमी, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. और क्या बात कर रहे हैं? केम फर्स्ट इन द क्लास. सो दैट इज द प्रेडिकेट पार्ट. नाउ यू कैन सी द फर्स्ट वन. फातिमा एंड आसिन आर गुड फ्रेंड्स. सो हम इसमें किसके बारे में बात करें? फातिमा एंड आसिन दोनों के बारे में. सो फातिमा एंड आसिन, होल दिस थिंग इज़ योर सब्जेक्ट एंड आर गुड फ्रेंड्स इज़ योर प्रेडिकेट. ठीक है, देन सेकेंड वन इज अक्रॉस द रिवर इज़ द स्मॉल विलेज. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द स्मॉल विलेज के बारे में. ठीक है, तो दैट इज़ योर सब्जेक्ट पार्ट एंड अक्रॉस द रिवर इज़ योर प्रेडिकेट. आई टोल्ड यू दैट द प्लेसेस कैन बी चेंज्ड. ठीक है, सो यहाँ पे प्लेस चेंज किया है, क्यों? ताकि एम्फेसिस देने के लिए ज़्यादा. ठीक है, देन यू कैन सी द थर्ड वन. द चिल्ड्रेन ऑफ द जूनियर क्लासेस हैव अ हॉलीडे टुमारो. सो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द चिल्ड्रेन ऑफ द जूनियर क्लासेस. सो होल दिस थिंग इज़ योर सब्जेक्ट एंड हैव अ हॉलीडे टुमारो इज़ योर प्रेडिकेट. ठीक है, देन फोर्थ वन, स्टैंड इन अ क्यू. ये एक इम्पेरेटिव का एग्जाम्पल है. ठीक है, सो सब्जेक्ट तो इम्प्लाइड होगा, सो सब्जेक्ट इज यू एंड द होल स्टैंड इन अ क्यू इज योर प्रेडिकेट. ओके, देन फिफ्थ वन इज़ वेरी इजी. विशाल इज एब्सेंट टुडे. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? विशाल. सो विशाल इज योर सब्जेक्ट एंड इज एब्सेंट टुडे इज योर प्रेडिकेट. ओके, देन द सिक्स्थ वन, मोहन एंड हिज टीममेट्स हैव वन द मैच. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन एंड हिज टीममेट्स. सो होल दिस थिंग इज योर सब्जेक्ट एंड हैव वन द मैच इज योर प्रेडिकेट. ओके, इन द सेवेंथ वन, माई ड्रीम इज़ टू बी अ डॉक्टर. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माई ड्रीम के बारे में. So that is your subject and is to be a doctor is your predicate. Then eighth one is most of my classmates stay in Noida. So हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Most of the classmates. So most of my classmates will be your subject and stay in Noida is your predicate. Okay. The ninth one is you cannot drink water inside the class. So you is our subject and cannot drink water inside the class is your predicate. ओके, देन टेंथ वन इज़ वेरी इजी. शालिनी इज़ अनवेल. सो हम किसके बारे में बात करें? शालिनी. सो शालिनी इज सब्जेक्ट एंड इज़ अनवेल इज़ योर प्रेडिकेट. आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर. ओके, नाउ दिस बी एक्सरसाइज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई कैन मेक यू मार्क, बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेंज एंड चूज अकॉर्डिंग टू योर विश ऑल्सो. ठीक है, बट देर आर सर्टन in which you have to make that only.
ठीक है. सो यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ दिए हैं, प्रेडिकेट दिए हैं, यू हैव टू मैच देम. सो फर्स्ट वन इज़ वीना. वीना इज़ अ गर्ल. ठीक है. एंड यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल देयर इज़ वन ई पार्ट, वॉज अपसेट विथ हर रिजल्ट. यहाँ पे हर है, सो यहाँ पे गर्ल का ही नाम होगा. ठीक है. विद गर्ल्स वी यूज़ हर, एक्चुअली विद द फेमिनिन वी यूज़ हर. सो यहाँ पे फेमिनिन नाम बहुत है, लाइक वीना, मीना, पायल. सो यू कैन चूज एनी वन, बट आई हैव चूजन वीना. Okay, so you can write for one, E was upset with her result. Then my hobby you can write is reading. ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है. You can write as my hobby. Okay, then third one is it. So you can write it is raining heavily. ठीक है. Then I, fourth one is, so I के साथ am लगता है, so am के एक ही example है. So I am going to Kashmir for my vacation. ठीक है. देन फिफ्थ वन इज़ माई फेवरेट फूड. माई फेवरेट फूड इज़ चाइनीज़. माई बर्थडे इज़ इन जून. देन सेवेंथ इज़ आई एम ओके आई कैन स्पीक फ्रेंच. ओके. देन एट्थ इज़ मोहन. मोहन हैज़ गॉन टू स्कूल. देन नाइन्थ इज़ मीना. मीना हैड सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट. एंड टेंथ इज़ पायल. पायल लिव्स इन कोलकाता. सो दिस मच यू कैन do. Then in exercise C, what you have to do, you have to add suitable subjects. Okay, so works in an office, so you can write anything. I have written my father. You can write whatever you feel like. So my father works in an office. Then second is a zebra has black and white stripes. Then third, stars shine in the sky. Fourth, children are in school. Fifth, Venus is the planet closest to the earth. Sixth, a child is playing with its toys. Seventh, she will come tomorrow. Eighth, Veena is very intelligent. Ninth, boys study in my school. 10th, elephant has large ears. It's not compulsory that you can write only these. You can write whatever you feel like. Okay. Then in D, what you have to do, you have to add suitable predicates. अब predicates अपने हिसाब से लिखने हैं. So whatever I'm telling you, you can write these also, and if you want to write something else, you can write that also. Like first one, my grandfather is very old. Manish and Ravi are brothers. The baby is sleeping. Some boys are naughty. The book is very beautiful. Lata Mangeshkar sings melodiously. Seventh, my favorite cartoon is Tom and Jerry. Veena lives in Prayagraj. Jack and Jill went up the hill. Then the captain of the team India is Virat Kohli. You can write whatever you feel like. Okay, so this much is there in this chapter. Okay, this is a very easy chapter, and whatever you feel like you can write as subject and predicate, but you have to see, like if the verb is plural you have to write according to that. like यहाँ पे are है फोर्थ वाला में, तो यहाँ पे कुछ प्लूरल में लिखना है. देन उसके नीचे में is है तो एक लिखना है. ठीक है, you have to see these things. Okay, so write accordingly and do this much. So this is the end of this chapter. It's a very small, easy chapter. Okay, so that's it in this video. Bye and take care.